Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So, Assalamu alaikum. This is Misbah Sajid, and I welcome you all to my channel, Talim for Everyone. In this video, we are going to cover question number 1, 2, and 3 of exercise 3B. So finally, we are going to start exercise 3B. In my previous video, I have discussed in detail what is basically significant figures, what is basically accuracy, degree of accuracy, and rules to identify significant figures. Okay, and this exercise is from chapter number 3, approximation and estimation. This chapter is from D1 or book 1, you can say. So here it's our question number 1. All right, and if you are using this textbook, so you may find this exercise 3B and question number 1 on page 70. And question number 1 is from basic level, comes in basic level. Okay, so question number 1, let's read out the statement of question number 1. State the number of significant figures in each of the following. We have to identify how many significant figures are there in each of the following figures. So first recall all the rules, 5 rules. So here are all 5 rules. Rule number 1, all non-zero digits are significant. Rule 2, all zeros between non-zero digits are significant. And in a decimal, all zero after a non-zero digit are significant. In a decimal, all zero between a before a non-zero digit are not significant. Means के decimal में decimal अगर value हो और zero आ जाए non-zero digit से पहले, it's not significant. In a whole number, the zeros at the end may or may not be significant. It depends on how the numbers are approximated. Okay, so part A is 39,018. Okay, and if you see, there is a zero in between, and according to rule number 2, all zeros between non-zero digits are significant. So therefore, how many significant figures are there? 5 significant figures. Simply you can write it as 5SF. Okay, fine. मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ. Part A 39018 5 significant figures. Okay, all right. Now part B 0.00283030. If you see, there are, you can say, 2 or 3 rules maybe apply over here in part B. So first is that first 2 zero would be ignored, would not be, you can say that first 2 zeros are not significant figures, because according to rule number 4, in a decimal, all zero before a non-zero digits are not significant. Okay, so first 2 zero we will ignore. Next is 28 non-zero, 3 is non-zero, it's significant. So 3 significants are there, for example. Okay, now let's see 0. If you talk about this 0, so this 0 is in between digits, non-zero digits. So this is also significant. So 2, 8, 3, 3 significant figures. This 0, 4 significant figures. Now if you see, rule number 1 and 2 तो यहाँ पे apply हो गए. Rule number 3 है कि in a decimal, all zeros after a non-zero are significant. If you see this last 0, it is after non-zero digits, so it means that it is also significant. So therefore, combining all these 3 rules, so how many significant figures are there? 1, 2, 3, 4, 5 significant figures are there. So आप लिख सकते हैं like 5 significant figures. Okay, it is you can say that it is for MCQs or fill in the blanks question. Okay, not theoretical case. Okay, subjective case, objective case. Next is 2,900 to the nearest 10. You have to identify significant figure to the nearest 10. So it means that 2,900. So unit 10, 100, 1000. शॉर्ट ट्रिक है, मैं इसमें ये नहीं बताऊंगी कि कैसे राउंड ऑफ होके 2900 आया. फिर 2900 to the nearest 10 you have to identify significant figure. So it means that 10 तक आपने काउंट करना है to the nearest 10. So it means that
10 से पहले पहले जो भी नंबर्स हैं आपके पास वो सब काउंट होंगे और 10 भी इंक्लूड होगा. So 1 2 3, 1 2 3. So how many significant figures are there? 3 significant figures are there. Okay. And यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? Rule number 5, that in a whole number the zeros at the end may or may not be significant. It depends on how the numbers are approximated. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any queries, so you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. So आगे चलते हैं. Here it's our next question. It is also in or you can say it is also a part of basic level. Okay, and it is again on page 70. So here in this question we have to round off each of the following to the number of significant figures as given in brackets. Okay, हमें round off का method तो पता है. To the nearest 10, 100, 1000, to the 1 dp, 2 dp, 3 dp. Okay, dp means decimal place. Okay, so it means that round up तो वैसे ही होगा. सिर्फ द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे वर्डिंग्स जो है वो चेंज कर दी गई हैं. लाइक 2 significant figures, 4 significant figures और 3 like this. Okay, so let's start. रूल्स को हमने अपने जहन में रखना है. तो पार्ट ए इज 728. पहली चीज तो ये, दिस इज अ होल नंबर. सो two significant figures. Two significant figures का मतलब there are how many digits are there? 3, and all are non-zero. So it means that 3 significant figures are there. But we have to round up this to the nearest 2 significant figures. So 1 2. All right, 1 2. So 2, this this one would be underlined, and this one इसकी जो राइट हैंड साइड पे होगी, जो मोस्ट राइट हैंड साइड पे जो डिजिट होगी, दैट वुड बी सर्कल. ओके, सो दिस इज अ होल नंबर. ओके, होल नंबर की राउंड ऑफ वैसे ही होगा जैसे हम टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 में करते हैं. ओके, सो इफ यू सी ओवर हियर 8 is greater than 5, so you will place 0 as a place holder. Okay, at one's place. Okay, now add 1 into 2, so 1 plus 2 is 3. Now it's 730, but no three significant figures. Okay, only 2 significant figures. So आप जो है यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो 730, 2 significant figures, 73 only. Okay, आंसर लिख दिया आपने फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, और आपने फिर एंड में आप यूं लिख सकते हो therefore 728 is equal to 730 to the 2 significant figure, or you can also write it as 728 is rounded up to 730 to 2 significant figures, to the nearest 2 significant figures. Okay, like this. Fine. So next is part B. 503, 503.88 to the 4 significant figures. Okay, all right. अच्छा, जैसे कि टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 एंड 1 डीपी एंड 2 डीपी में थोड़ा बहुत जो है चेंजेस थी. तो जो है यहाँ पे जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो काउंट वैसे ही करना है और प्रोसीजर हमने वही अप्लाई करना है. ठीक है, अभी आप लोग देखिएगा. ठीक है, सो 503.8. So if you see, there are almost 1 2 3 4 4 non zero digits. Okay, so it means that 4 significant figures are there. And if you talk about zero, this zero, so zero is in between non-zero, so 5 significant figures are there. But we have to round up this to the 4 significant figures. So 1 2 3 4, this is okay, and this one would be circled. So if you see, this is greater than 5, so हम जो है 1 प्लस कर देंगे 8 में, अंडरलाइन वाली वैल्यू में, और उसकी जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे. ठीक है, इग्नोर हो जाएगी, कुछ नहीं लिखते, क्योंकि जब डेसिमल में हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, जो सर्कल वैल्यू होती है और एक्स्ट्रा वैल्यू होती है सर्कल वैल्यू के राइट हैंड साइड पे, उनको हम इग्नोर कर देते हैं. सो 8 plus 1 is 9, 3 0 5, so 5039, 503.9, or you can write it as like, therefore 503.88 is equal to 503.9 to the nearest 4 significant figures, like this. Okay, so I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any queries, so you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. Next is part C. Part C is 0.5
0030185, okay, to the nearest four significant figures. Okay, all right. So recall करते हैं rules को according to rule uh, according to rule 4, zero before non-zeros are not significant. So it means that इन्हें तो हम ignore करते हैं, या you can say that इनको हम as it is note down कर लेते हैं 0.00. Okay, next is that 30189. Okay, there are one, two, three, four non-zeros, so four significant figures. And if you talk about this zero, so this zero comes in between two non-zeros, so it means that it is also significant figure. So total five significant figures, so we have to round off these to the four significant figures. So one, two, three, four, this one would be underline, this nine would be circle. So सारी गेम हमारी इस पे बेस करेगी. So 9 is greater than 5, so 1 हम अंडरलाइन वैल्यू में ऐड कर लेंगे. So 1 plus 8 is 9. Okay, uh, 1 as it is 0 3. और जो सर्कल वैल्यू होती है उसके और सर्कल के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है इन अ डेसिमल, जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो इग्नोर हो जाते हैं. तो 0.003019, okay, इसका फाइनल आंसर. सो यू कैन राइट इट एज देयरफॉर 0.00300185 is equal to 0.003019, or you to the nearest four significant figure, or you can write it as like therefore 0.00300185 is rounded up to 0.003019 to the nearest four significant figures. Okay, so I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. Now पार्ट डी देखते हैं. तो मैं जा रही हूँ करने इसको इरेज. ओके, सो हियर इट्स पार्ट डी भी हो गया है. नो, पार्ट डी नहीं हुआ है. पार्ट डी 6396. So if you see over here, it's a whole number, non-zero digits. So non-zero digits are all significant. So we have to round off to the two significant figure and three significant figure. Okay, so two significant figure. पहले हम टू सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ कर लेते हैं. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस 1 2. Two significant figures. Okay, so 1 2, this one would be underline, this one would be circle. अब इसकी जो राउंड ऑफ जो है मेथड वैसे ही, टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 100, क्योंकि ये होल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नहीं है. सो जो सर्कल से पहले वाली जो हमारी वैल्यू, उसकी जगह तो आ जाएगा 0 एज अ प्लेस होल्डर. एंड नाउ इफ यू सी दिस सर्कल वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, इसकी जगह भी आ जाएगा 0. बट जो अंडरलाइन वैल्यू है उसमें जो है हम क्या ऐड कर देंगे 1. सो 3 + 1 is 4, 6400. Okay, so 6396 is rounded up to 6400 to the nearest two significant figures. So 1 2 significant figures are there, because according to rule 5, rule 5 क्या कहता है, 0 after whole number may or may not be a significant figure. Depends upon the numbers are approximated, how it is approximated, how the number is approximated. Okay, now here is part 2. Part 2 D. Part 2 says that round of 6396 to three significant figures. Okay, three significant figures का मतलब ये है कि 1 2 3. This value would be underlined, this one would be circled. Okay, if you see circle value is greater than 5, so 9 में हम 1 प्लस कर देंगे, 6 की जगह 0 आ जाएगा एज अ प्लेस होल्डर एट अ 1 प्लेस. तो 9 + 1 is 10, 1 कैरी, 3 + 1 is 4. तो आंसर तो सेम ही आया है, बट यहाँ पे जो काउंट होंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक काउंट होंगे. ठीक है, इस 0 को हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब कि लिखेंगे तो, बट ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल 5 दैट
zeros after whole number may or may not be significant figure. It depends upon how the number is approximated. Okay, so in this way the number is approximated, so you may write it as 6396 is rounded up to 6400 to the three significant figures. Okay, so I hope तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. I'm going to clear it all. Okay, now part E. 9.9999 to the three significant figure. Okay, all right. So 1, 2, 3. This would be underlined. This would be circled. Okay, and जब हम डेसिमल की राउंड ऑफ करते हैं, जो एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं सर्कल से पहले राइट हैंड साइड पे, दैट वुड बी टोटली इग्नोर. हम जीरो भी नहीं लिखते हैं एज अ प्लेस होल्डर. ओके, एंड जो सर्कल वैल्यू होती है उसकी जगह पे हम कुछ नहीं लिखते हैं. सो इफ यू सी दिस 9 इज ग्रेटर देन 5, बट हम 1 ऐड कर देंगे 9 में. सो 9 plus 1 is 10. 1 carry. 9 plus 1 is 10 again. 1 carry. So 9 plus 1 is 10. Okay, so 10.00 answer है इसका. But according to this rule, we know that zero after non-zeros are significant. So ये सब जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबके सब जो है वो क्या कह सकते हैं, यू कैन से दैट सिग्निफिकेंट है. तो लेकिन हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो ये वाला जीरो जो है कैंसिल कर देंगे. अब हम कैंसिल करेंगे. सो इसका आंसर है 10.0. only three significant figures के according. So you can write it as at the end of the answer, like therefore 9.9999 is rounded up to 10.0 to the three significant figure. It is similarly like this कि आपको जो है वन डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर चाहिए, और पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो भी लिखना होगा. ठीक है. Come to the part F. 8.076, okay, to the three significant figures. All right, and if you see all our significant figures, okay, ये सिर्फ एक जीरो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, and we know that zero in between non-zero digits all are significant, so non-zero digits are also significant. So according to that, four significant figures are there, but we have to round up this to the three significant. So 1, 2, 3, this one would be underlined and this one would be circle. So if you see over here, this is greater than 5. So 1 हम ऐड करेंगे 7 में. 7 plus 1 is 8. Okay, इसकी जगह हम जीरो नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, टोटली इग्नोर, बिकॉज डेसिमल की जब हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंडिंग ऑफ जब करते हैं डेसिमल नंबर्स को, तो जो सर्कल वैल्यू होती है, सर्कल वैल्यू से पहले जो नंबर्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनकी जगह जीरो नहीं लिखते, ड्रॉप करते हैं. ठीक है, जीरो एज इट इज पॉइंट ये वाला. so 8.08. all right, so you can write it as like 8.076 is equal to 8.08 to three significant figures. All right, so I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any query, you may commit your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू erase it all. ओके, तो आप लोग कॉपी कर लीजिएगा. आई थिंक ओके, मुझसे बाय मिस्टेक जो है शेयरिंग बंद हो गई थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 3. So sharing बंद हो गई थी, so I'm sorry. So here it's question number 3, and if you see question number 3 is related to intermediate level or comes in intermediate level, and it is again on page 70. And here let's read out the statement of question number 3. The number of 1,43,200 is correct to x significant figures. Write down the possible values of x. Means if you see over here, this is whole number and there are two zero before non-zeros.
after non-zeros. Okay, and according to rule 5, what rule 5 says that it is that कि जो है zero after non-zero in a whole number may or may not be significant figure, may or may not be significant. It depends upon how the number is approximated. So अगर आप जो है देखो, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं अगर हम ये दोनों जीरो पे लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं। एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है अगर मैं ये वाला जीरो जो है कैंसिल कर दूं, ठीक है। मतलब कि अगर 10 तक आपकी जो है क्या कहते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ टू दी 10 आपको जो है राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। अगर आपको कहा जाए टू दी 10, आपको जो है राउंड ऑफ किए किसी वैल्यू को टू दी 10 और ये आंसर आ रहा है, सो इसका मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। टू दी 100 कहा जाए, टू दी 100 इसका मतलब यहाँ तक तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर नहीं कहा जाए टू दी मतलब कि होल नंबर में ही आपको चेंज करना हो, सो इट मींस दैट 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, फाइन। सो अगर इंक्लूडेड है, सो इट मींस अगर ये इंक्लूडेड, अगर हम इस पूरी वैल्यू में जीरो इंक्लूड कर दें दोनों, तो इसका मतलब ये 4 नॉन जीरो के साथ ये भी जो है ये जीरो अगर इंक्लूड हो जाए तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर एक लास्ट यूनिट प्लेस वाला जीरो हम इग्नोर करते हैं तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर हम दोनों जीरो यूनिट और 10 दोनों जीरो जो है कैंसिल कर देते हैं, सो इट मींस दैट 4 significant figures. So it means that 3 possible values of x are there: 6 significant figures, 5 significant figures, 4 significant figures. Okay, 6 when we take whole value as it is, 5 significant figures when we round it off to the nearest 10, 4 to the nearest 100. Okay, so I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। If you have any queries, so you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. In between जो है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 स्टार्ट करने से पहले मेरी जो है वीडियो स्टॉप हो गई थी, शेयरिंग स्टॉप हो गई थी, सो इग्नोर दैट। ओके, टोटली इग्नोर दैट, वरना जो है अगर मैं पूरी कैंसिल करती तो मुझे फिर दोबारा शुरू से जो है रिकॉर्डिंग करनी पड़ती। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्यूरी हो, आप लोग किसी भी वक्त पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम एज सून एज पॉसिबल। सो thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for everyone and hit like button and press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहे। तो थैंक यू वंस अगेन, अल्लाह हाफिज।